नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। द क्वेश्चन इज 4xy plus 3y square minus x into dx plus x in bracket x plus 2y into dy equal to 0। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे विथ इक्वेशन m into dx plus n into dy equal to 0। सो ऑन कंपेरिजन हमें वैल्यू ऑफ m मिलेगा 4xy plus 3y square minus x। नाउ इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। सो वी राइट del m upon del y equal to डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इसमें 4x will be constant and derivative of y with respect to y will be 1. So we write 4x into 1 plus in second term derivative of y square will be 2y, on multiplication with 3 we get 6y minus derivative of x that is constant will be 0. So we write minus 0. So del m upon del y equal to 4x plus 6y. Let this be equation number 1. Similarly, value of n will be x in bracket x plus 2y. Let us open the bracket. We write x square plus 2xy. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे partially with respect to x. So we write del n upon del x equal to differentiation of x square is 2x plus differentiation of 2xy. इसमें 2y will be constant and derivative of x with respect to x will be 1. So we write 2y into 1. Let this be equation number 2. Now इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद वी कैन से दैट del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो इस इक्वेशन को हमें एग्जैक्ट बनाना होगा बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन विथ सम सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिसाइड करने के लिए देयर आर 4 क्राइटेरियाज। उनमें से एक क्राइटेरिया है del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x। अगर ये इक्वेशन हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू देता है या फिर एनी डिजायर्ड वैल्यू देता है, वी कैन प्रोसीड विद दिस क्राइटेरिया फर्दर। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। del m अपॉन del y इज 4x plus 6y minus del n upon del x is 2x plus 2y. Let us open the bracket. तो यहाँ पे 4x minus 2x will give us 2x plus 6y minus 2y will give us 4y. Now इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे by n. So let us substitute the value of n as x in bracket x plus 2y. Now in numerator में से we can take 2 as common, so we write 2 in bracket x plus 2y. Now ये x plus 2y from numerator and denominator both will get cancelled, so we get 2 upon x. That means del m upon del y minus del n upon del x whole divided by n is a function of x. Now if this ratio is a function of x, in that case the value of integrating factor is given by e raised to integration of f of x into dx. Let us substitute the value of f of x. So we write e raised to integration of 2 upon x into dx. Now यहाँ पे 2 constant है, so let us take it outside the integral. So we write e raised to 2 into integration of 1 upon x into dx. Now
integration of 1 upon x is log x. So therefore we get e raised to 2 log x. Now ये 2 log x we can write as e raised to log x square by following a logarithmic rule of n log a equal to log of a raised to n. Also we can write this e raised to log x square as x square by following a logarithmic rule of e raised to log a is equal to a. तो ये रहा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ गिवन इक्वेशन को हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज द गिवन इक्वेशन. लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर. सो वी गेट 4x cube y plus 3x square y square minus x cube into dx plus x raised to 4 plus 2x cube y into dy equal to 0. Let this be equation number 3. Now इस इक्वेशन को हम once again कंपेयर करेंगे with equation m into dx plus n into dy. So on comparison we get value of m as, instead of m we will write m dash. So value of m dash is 4x cube y plus 3x square y square minus x cube. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. सो वी राइट del m dash upon del y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. इसमें से ये 4x क्यूब विल बी कांस्टेंट क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1. सो वी राइट 4x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म. इसमें अगेन 3x स्क्वायर विल बी कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विल बी 2y. सो वी राइट 3x स्क्वायर in bracket 2 into y minus derivative of this x cube that is constant will be 0. So we write minus 0. So therefore we get value of del m dash upon del y as 4x cube plus 6x square y. Let this be equation number 4. Now similarly value of n dash will be x raised to 4 plus 2x cube y. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी राइट del n dash upon del x equal to डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4 is 4x cube plus डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड टर्म. इसमें से 2y will be constant and derivative of x cube will be 3x square. So we write 2y into 3x square. Let us simplify this further. We write del n dash upon del x equal to 4x cube plus 6x square y. Let this be equation number 5. Now इस इक्वेशन 4 and 5 को कंपेयर करने के बाद we can say that del m dash upon del y is equal to del n dash upon del x, and therefore the modified equation number 3 is exact differential equation, and in this case general solution is given by integration of m dash into dx plus integration of terms in n dash free from x into dy equal to c. So let us substitute the value. Value of m dash is 4x cube y plus 3x square y square minus x cube into dx plus. Now from the equation of n हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसिडर करने हैं जिनमें x नहीं है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स में x है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ n डैश इन दिस इक्वेशन एक भी टर्म नहीं जाएगा. So we will simply write integration of 0 into dy equal to c.
Let us open this bracket. So in first term, integration is with respect to x, so this 4y will be constant, so we write 4y into integration of x cube into dx, plus in second term 3y square will be constant, so we write 3y square into integration of x square into dx minus integration of x cube into dx equal to c. Let us simplify this further. So we write 4y into integration of x cube is x raised to 4 upon 4 plus 3y square into integration of x square is x cube upon 3 minus integration of x cube again is x raised to 4 upon 4 equal to c. Let us simplify this further. We get x raised to 4 into y plus x cube into y square minus x raised to 4 upon 4 equal to c, and this is our final answer. Next question is solve x sin x into dy plus xy cos x minus y sin x minus 2 into dx equal to 0. नाउ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए एज पर अवर रेगुलर प्रोसीजर हम कंपेयर करेंगे विथ इक्वेशन m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0. सो ऑन कंपेरिजन हमें वैल्यू ऑफ m मिलेगा एक्स वाई कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस 2. नाउ इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. सो वी राइट del m अपॉन del y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. इसमें x एंड cos x विल बी कांस्टेंट बिकॉज हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1. सो वी गेट x cos x इंटू 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म. यहाँ पे sin x विल बी कांस्टेंट and again derivative of y with respect to y is 1, so we get minus sin x. Now third term is constant, तो उसका derivative 0. So finally we get this equation. Let this be equation number 1. इसके बाद value of n will be x into sin x. Now इस equation को हम differentiate करेंगे partially with respect to x. Now इससे पहले कि हम इसे डिफरेंशिएट करें, एक चीज़ हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी होगी. दिस इक्वेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इन x. पहला टर्म है x और दूसरा टर्म है साइन x. तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज करना होगा विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. सो वी राइट डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू u डैश, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म that is del by del x of x multiplied by v that is sin x plus derivative of second term that is sin x del by del x of sin x multiplied by u that is x. Now let us simplify this further. Derivative of x with respect to x will be 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा sin x plus डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इंटू cos x. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट अस कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x एंड देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड हेंस इस इक्वेशन को हमें एग्जैक्ट बनाना होगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ सम सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हम वही क्राइटेरिया यूज करेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था. दैट इज मेकिंग यूज ऑफ दिस इक्वेशन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स. अगर इस इक्वेशन को हम n से डिवाइड करते हैं और रिजल्टिंग इक्वेशन जो हमें मिलेगा if it is a function of x, then we can proceed with it further. So let us substitute the value. So
del m upon del y is x cos x minus sin x, and del n upon del x is sin x plus x cos x. Let us open the bracket. तो यहाँ पे x cos x और ये माइनस x cos x will get cancelled, तो हमें यहाँ पे मिलेगा minus 2 sin x. Let us divide this equation by n. Let us substitute the value of n. तो यहाँ पे sin x from numerator and denominator will get cancelled और हमें वैल्यू मिलेगा minus 2 upon x. That means this ratio is a function of x, and hence in this case integrating factor is given by e raised to integration of f of x into dx. Let us substitute the value of f of x. So we write e raised to integration of minus 2 upon x into dx. Now again यहाँ पे minus 2 is constant, therefore we write e raised to minus 2 into integration of 1 upon x into dx. Now integration of 1 upon x into dx is log x. So we write e raised to minus 2 into log x. Now इस वैल्यू को we can write as e raised to log x raised to minus 2 by following a logarithmic rule of n log a equal to log of a raised to n. Further, again इस वैल्यू को we can write as x raised to minus 2 by following a logarithmic rule of e raised to log a is equal to a. तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1 upon x square. Now this is the given equation. Let us multiply it by integrating factor, and simplifying it further we write sin x upon x into dy plus xy cos x minus y sin x minus 2 whole divided by x square into dx equal to 0. Let this be equation number 3. Now इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे with equation m dash into dx plus n dash into dy equal to 0. So on comparison we get value of m dash as xy cos x minus y sin x minus 2 whole divided by x square. Let us simplify this equation further. So we write xy cos x upon x square minus y sin x upon x square minus 2 upon x square. Therefore value of m dash will be y cos x upon x, then y sin x upon x square minus 2 upon x square. Now let us differentiate this equation partially with respect to y. Therefore we write del m dash upon del y equal to, now in first term cos x and x ये कांस्टेंट रहेंगे and derivative of y with respect to y will be 1. Therefore we write cos x upon x into 1 minus in second term sin x and x square will be constant, and again derivative of y with respect to y will be 1. So we write sin x upon x square into 1 minus 2 as well as x square will be constant and derivative of constant is 0. Therefore final equation यहाँ पे हमें मिलेगा cos x upon x minus sin x upon x square. Let this be equation number 4. इसके बाद value of n dash will be sin x upon x. Let us take derivative of this equation partially with respect to x. Now ये जो equation है it is a product of two functions in x. पहला फंक्शन है 1 by x और दूसरा फंक्शन है sin x. Therefore we will use product rule of differentiation which is given by this equation. Hence we write del n dash upon del x equal to derivative of first term that is sin x is del by del x of sin x into second term as it is, that is 1 by x, plus derivative of second term that is del by del x of 1 by x into sin x
as it is. Let us simplify this further. Derivative of sin x is cos x into 1 by x plus derivative of 1 by x is minus 1 by x square into sin x. तो यहाँ पे हमें मिलेगा cos x upon x minus sin x upon x square. Let us name this equation as equation number 5. Now equation 4 और 5 को कंपेयर करने के बाद we can say that del m dash upon del y is equal to del n dash upon del x, and therefore the modified equation number 3 is exact differential equation, and hence in this case general solution is given by integration of m dash into dx plus terms in n dash free from x into dy equal to c. Let us substitute the value of respective terms. So m dash is y cos x upon x minus y sin x upon x square minus 2 upon x square into dx. Now from the equation of n हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसिडर करने हैं जिसमें x नहीं है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी टर्म इक्वेशन ऑफ n डैश में नहीं है. सो वी विल सिंपली राइट integration of 0 into dy equal to c. Therefore let us open this bracket. In first term y is constant, therefore we write y into cos x upon x into dx minus in second term also y is constant, so we write y into integration of sin x upon x square into dx minus 2 into integration of 1 by x square into dx equal to c. Now ये जो second term है it is basically a product of two function in x. पहला function है 1 by x square और दूसरा function है sin x. Hence we will use integration by parts which is given by this equation. Therefore we will write y into integration of cos x upon x into dx minus y into u की जगह पे we will write sin x into integration of v into dx, that is integration of 1 by x square into dx minus in bracket u dash, that is d by dx of sin x into integration of v into dx, that is integration of 1 by x square into dx bracket close into dx minus 2 into integration of 1 by x square into dx. Now यहाँ पे if x square goes to numerator it will become x raised to minus 2, and integration of x raised to minus 2 will be x raised to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 equal to c. Let us simplify this further. So we write y into integration of cos x upon x into dx minus y into sin x in bracket integration of 1 by x square into dx is x raised to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 minus d by dx of sin x is cos x into once again integration of 1 by x square will be x raised to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 into dx minus 2 into यहाँ पे x raised to minus 2 plus 1 will become x raised to minus 1 जो हम लिख सकते हैं 1 by x, and minus 2 plus 1 means minus 1, तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे इक्वल टू c. Therefore y into integration of cos x upon x into dx minus y into sin x into, again this bracket will be minus 1 upon x minus integration of cos x into this bracket minus 1 upon x into dx. Now यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस साइन विल बिकम प्लस 2 upon x equal to c.
simplifying it further, we write y into cos x upon x into dx minus, now यहाँ पे ये माइनस और माइनस साइन विल बिकम प्लस, सो वी राइट प्लस y अपॉन x इंटू साइन x, देन यहाँ पे माइनस एंड माइनस साइन विल बिकम प्लस, बट यहाँ पे तीसरी बार माइनस साइन है, सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी माइनस y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन x इंटू dx प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू c। नाउ यहाँ पे ये पहला और तीसरा टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास बचेगा y अपॉन x इंटू साइन x प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।